Assalamu alaikum. Last week we started, not in the last week, but the last class, we started the Bernoulli equation. That is the chapter number 3 of your book, Elementary Fluid Dynamics, and the topic is the Bernoulli equation. And we discussed in the last lecture about streamlines. What are streamlines? Discussed what is steady state flow. We discussed about in-state and incompressible flow. We discussed about streamlined and SN coordinates, which is streamline and normal coordinates. And we discussed different types of forces acting on the fluid particle. And we discussed about the acceleration along the streamline. And across the streamline. These were the topics we discussed in the last lecture. Any confusion in these topics? Any confusion or any question regarding these? So I believe the last topic was clear to all of you. Today we are going to discuss a fluid particle. Let's say it is of this shape. And it is on some streamline. Let's say this is the streamline on which we are taking this particle. And we are going to discuss the nature of forces acting on this particle. And we are then going to apply Newton's second law on this particle to drive the famous Bernoulli equation. Okay. So in the last class, we discussed the types of forces acting on the fluid particle. Can anyone tell me what type of forces are acting on a fluid particle? Can anyone explain or just name the type of forces acting on a fluid particle? We discussed it in the last lecture. So force due to weight and pressure. Force due to weight and pressure, and there will be viscosity effects as well as surface tension effects. But we will be considering only forces due to weight and pressure. And pressure. Yes, sir. Good. So what we do, this particle is basically located in XZ coordinate system, right? This is the x-axis, and this is it is located in XZ plane. But we defined a coordinate system along this particle, which we named as SN coordinate system. So this is our S coordinate, which is a coordinate along the streamline, and this is N coordinate, which is coordinate normal to the streamline. Okay, clear? Okay. And there will be two types of forces acting on this particle. One will be the force of the weight and the other will be force of pressure, right? We define the dimensions of this particle as this tilted dimension is delta S, which is along the streamline, and this dimension is delta N. Clear? Okay. And into the page, that is the depth of this particle into the page, is del y. Okay, which we write as width of this particle is, because z-axis it is in the xz plane, so that would be along y, is del y. Okay, width of this particle is so the volume would be equal to, we define that volume as del v with this symbol, that would be equal to just multiplication of these three lengths, delta S into delta N into delta Y. Clear? Yes, sir. As it is a fluid particle, so the weight of this particle would be equal to gamma into, right? Is that clear? Yeah. Now we all know that the weight always act, but
perpendicularly downwards, right? So the weight will act perpendicularly downwards, right? जी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? आ रही है सर ठीक है, weight will act perpendicularly downwards is W, and if we just extend this coordinate, normal coordinate downwards here, this angle will be defined as angle. This angle will be angle theta. Okay, clear? जी सर जी सर So there will be a component of weight along the streamline and normal to the streamline, right? जी सर So what we are going to do is apply, without applying pressure, में आप equilibrium equation, Newton's second law, I would like to discuss the pressure force. We all know that the pressure force acts perpendicularly to the surface, ऐसा ही है. जी If the pressure at the center of this particle is P, ठीक है, तो what would be the pressure on the two faces? If the pressure at this point, center point is P, we have discussed it in the last chapter, very beginning of the chapter number 2, that the pressure at the faces will be calculated using, my understanding वो तो होगा if pressure at the center is P, if pressure here is P of this particle, what would be pressure at this face? Let's say it is acting like this. This is the pressure force, and what will be the pressure at this face? The right face, and there will be a change in pressure. There will be a change in pressure, and we say, okay, on the right side it would be equal to P plus delta P, right? जी And on the left side it would be equal to P minus डेल्टा भी delta P. Clear? और इसको हमने force बनाना है तो we will multiply it with okay area, and that area is P delta into D n by delta y n into delta y. Is that clear to everyone? जी सर Now the question comes, what is delta P here? वो change कितनी होगी? वो हमने calculate करना सीखी हुई है. If you just recall the beginning of chapter number 2, we discussed the type of series. We call it Taylor series. ठीक है? ऐसा ही और Taylor series हमने delta P calculation की हुई है. अगर आपको याद हो तो. याद है कि नहीं? यस सर क्या आती है फिर डेल्टा पी? अब टेलर सीरीज अप्लाई करेंगे, मुझे बताएं डेल्टा पी क्या होना चाहिए? along the streamline. ये streamline वाली साइड है, ठीक है? सही. जी याद है कि नहीं? टेलर सीरीज भूलते जा रहे हैं साथ साथ. अगर कोई रिस्पांस देंगे तो मेरे लिए आसान होगा गेज करना कि आपको याद है कि नहीं. सर क्योंकि दो साइड्स की फोर्स आएगी नहीं, अभी हम सिर्फ along the streamline बात कर रहे हैं. अभी हम normal to the streamline बात करेंगे. ठीक है? यस सर अभी हम along the streamline बातें कर रहे हैं सिर्फ. normal to the streamline डिस्कशन हम इंशाल्लाह करेंगे इसके बाद. जी, तो डेल्टा पी क्या होगा? टेलर सीरीज एक्सपेंशन से हमने कैलकुलेट किया था. डेल्टा पी वुड बी along the streamline delta PS कहेंगे उसे हम, ठीक है? Because this is along the streamline, इसमें delta PS कह देता हूँ. Delta PS and delta PS, center पे pressure P ही है. Delta PS would be equal to, क्योंकि हम approximate कर रहे हैं using Taylor series, तो हम इसको approximate sign कर रहे हैं. Delta PS approximately would be equal to partial P by partial S into I del S by 2, right? याद आया कुछ? यस सर F of X अगर हमने approximate करना है at some location F of A, तो what would we do? F of A would be equal to F of 0 plus F dash of A into X minus A. This is the Taylor series.
अगर नहीं याद आ रहा तो चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट में जाएंगे, वहां पे मैंने फुल एक्सप्लेन की थी लोगों को, और इसी प्रेशर के लिए एक्सप्लेन था। इस तरह से हम अप्रोक्सीमेट करेंगे यूजिंग टेलर सीरीज। Number 2 is I'm going to write f equals to ma along the streamline. याद रखना है हम along the streamline की बात करें, कुछ forces मिसिंग है इस फिगर के अंदर, write those forces once we are writing equation for normal to the streamline, ठीक है। So f equals to ma along the streamline, अगर मैंने apply करें तो I should be writing summation of forces which are small forces because we are considering a fluid particle. Summation of all the forces along the streamline should be equal to mass of the fluid particle, because it's a small particle, again we'll be considering small symbol delta, into acceleration of the particle along the streamline. Clear? Newton second law. ठीक है सर, हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ यही होगा ना, along the streamline. Yes, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. Mass किसके इक्वल होगी? Mass would be equal to density into volume, right? Volume. Density is here and volume we know as delta. And acceleration would be equal to, along the streamline हमने पढ़ी थी acceleration इक्वल होती है, कुछ याद है? Acceleration is equal to velocity into partial v by partial s, right? Yes, sir. So Newton's second law along the streamline is in this form. Right side को तो हमने completely explain कर ली थी, right side में ये चीजें आ जाएंगी. Now the left side delta fs, summation delta fs. It is basically sum of all the forces that is acting along the streamline. So there are two type of forces. Delta fs would be equal to summation delta fs would be equal to delta f pressure forces along the streamline, right, plus delta weight along the streamline. समझ आ गया? ऐसे ही होगा जी? Yes, sir. तो अब हम 1 by 1 देखते हैं कि डेल्टा fps किस इक्वल होगा और डेल्टा ws किस इक्वल होगा, ठीक है। सो वी राइट हियर प्लस द वेट को हम रिजॉल्व कर लेते हैं. व्हाट इज वेट ऑफ द पार्टिकल अलोंग द स्ट्रीमलाइन? डेल्टा ws दैट इज इक्वल टू जी, कैन एनीवन, किसी को समझ आ रहा है यहां से कि वेट किस इक्वल होगा? Time theta होगा. जी, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द वेट अलोंग द स्ट्रीमलाइन, राइट? जी. And that would be equal to w Sin theta. sin theta. Thank you. So we write delta w is equal to delta w sin of theta, and we know delta w is equal to gamma into volume, right? जी. So right, gamma into delta v sin theta. Next is delta fps. That would be sum of the pressure forces along the streamline, considering right stream as positive and left as negative, ठीक है? This should be equal to p minus delta ps into delta and delta y minus p plus delta ps into delta and delta y, right? This is the positive term and this is the negative term of the pressure force. So along the streamline दोनों को हम sum कर देंगे. So delta ps would be equal to p minus delta ps with a negative sign p plus delta ps. These
these are the pressures basically. Net pressure on the body along the streamline on the particle multiplied by the area delta n into delta y. Clear? Yes, sir. So when we will open the p negative sign, p will cancel out. ऐसा ही है. ठीक. This p will cancel with this p, and we will only be left with delta fps minus 2 delta ps into delta n delta y. Clear? Right? Yes, sir. And from here we know the delta ps is equal है partial p by partial s into del s by 2. ठीक है? So I'm just making this replacement in my equation. I'm writing delta ps. I'm replacing delta ps with minus 2 into partial p by partial s, that is gradient of pressure along the streamline, into del s by 2 into del n del y. Right? I will cancel this 2 with 2, and I will have, and we know that del s del n into del y is Volume. volume, so minus partial p by partial s into del p. So delta p. तो हमने दोनों फोर्सेस जो है नेट फोर्सेस देख ली, प्रेशर की भी और वेट की भी along the streamline. So what we'll do, we'll just put them back into the Newton second law. यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है, इस जगह. We'll just write minus partial p by partial s del p. Then we'll have the weight force. From the figure we can see that the weight force is negative. ऐसा ही है, because it is opposite to the streamline direction, positive streamline direction. ऐसा ही है. ठीक. So we'll introduce negative sign here, minus del w sin theta. So we'll be just writing minus gamma into volume sin theta. And finally, this should be equal to density into volume into acceleration, mass into acceleration. Should be equal to rho into del b into v partial p by partial s. Clear? You can see that the volume will cancel out. This v will cancel with this v and this v. So we'll have minus partial p by partial s minus gamma sin theta minus rho v partial v by partial l is equal to 0. Clear? ठीक, sir. यहाँ तक किसी को कुछ समझ ना आई हो? Any question till this point? Anyone? क्वेश्चन समझ आ गई. ठीक है, तमाम स्टूडेंट को समझ आ गई थी, क्योंकि इसके बाद अब मैं इस इक्वेशन में कुछ मॉडिफिकेशंस करने वाला हूँ, मैथमेटिकल मॉडिफिकेशंस. तो फिर आपको बैकवर्ड इस इक्वेशन को समझाना मुश्किल हो जाएगा. तो अगर यहाँ तक समझ आ गई तो हम फिर आगे की तरफ चलते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. So basically what this equation A is representing, it is representing that the acceleration of the particle is because of the difference of the pressure and weight forces along the streamline. ऐसा ही है?
पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है उसकी एक्सेलरेशन की वजह क्या है? देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ द वेट एंड देयर इज Pressure. प्रेशर डिफरेंस। तो उन दोनों फोर्सेस का जो नेट रिजल्ट है दैट इज कॉज ऑफ द एक्सेलरेशन। अगर मैं ये कहूं कि वेट कोई रोल प्ले ना करे तो इन दैट केस द पार्टिकल शुड बी द थीटा शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब पार्टिकल शुड बी अलाइंड विद माय एक्स एक्सिस। ऐसा ही है, द स्ट्रीमलाइन शुड बी फॉलोइंग द एक्स एक्सिस, दैट इज स्ट्रीम वाइज कोऑर्डिनेट शुड बी अलोंग द एक्स एक्सिस। ऐसा ही है, ठीक है। जी। So if the particle is horizontal, is along the x-axis, then we'll have no effect of the weight. We'll have only acceleration because of the pressure. Clear? जी सर। So along the streamline, the acceleration is because of the difference of the pressure and the weight forces. अब एक चीज हम यहाँ देखते हैं, लेट्स से हम ये कहते हैं जो डायमेंशन x के along है that is delta x, जो भी इमेज बनेगा इस पार्टिकल का, ठीक है, और जो z के along है that would be delta z. Clear? जी सर। So what we do is just we are placing the particle, let's say यहाँ पे मैं आपके सामने इस एक्सिस सिस्टम में प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। So अगर ये डायमेंशन कितनी होगी जो वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ की है, यहाँ पे छोटी सी वर्टिकल लाइन आपने नजर आ रही है, ये वाली डेल्टा जी। दैट डेल्टा जी एंड दिस इज ये जो पार्टिकल की अपनी डायमेंशन, दिस इज डेल्टा Delta N. एंड दिस एंगल इज Theta. थीटा, ठीक है। एंड दिस डायमेंशन इज ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज डेल्टा एस। डेल्टा एस, राइट, ठीक है, समझ आ गई बात। जी सर। सो वी विल हैव अ ट्रायंगल इन विच मैं जो ट्रायंगल ड्रॉ करने जा रहा हूँ ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक है, उस रेफरेंस के साथ। we'll have a triangle like this, जिसमें ये वर्टिकल हाइट क्या होगी जी, डेल जी, ऐसा ही है। दिस एंगल वुड बी एंगल थीटा एंड दिस साइड वुड बी डेल एस। क्लियर है? इज इट क्लियर? सर ऊपर वाला ट्रायंगल दिखाएंगे जो पहले बनाया था। ऊपर वाला मैंने आपको एक डायमेंशन में समझाया था, दो ट्रायंगल्स बनने हैं बेसिकली। तो सर डेल्टा जी नहीं है पर मैं यहाँ आपको पर दोनों समझा देता हूँ, एक मिनट। दो ट्रायंगल्स बनने हैं बेसिकली। ये आपकी बॉडी है, ठीक है, इट इज इन दी एक्स जी प्लेन, एक्स एंड दिस इज जी। एक ट्रायंगल बनेगा, इसकी जो हॉरिजॉन्टल है ये एक लेंथ है, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल बना रहे थे। एक ये है और ये एंगल थीटा है। दिस डायमेंशन इज del s, this is del z and this is del x, right? जी सर। और एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, जिसमें ये dz है, this is सॉरी वो ट्रायंगल में आपको समझाना चाहिए, जब उसकी बारी आएगी फिर हम उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अभी हमें along the streamline बात करनी है। तो along the streamline ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये ट्रायंगल समझ आ रहा है आपको? जी सर। From this we can calculate sin theta. किसके इक्वल आएगा sin theta? डी बाय डी एस। ये sin theta would be equal to dz by ds। अब मैं पार्शियल्स के सिंबल्स को जो मैं डेफिनेट सिंबल से रिप्लेस कर रहा हूँ। ये चीज समझ आ रही है क्यों रिप्लेस कर रहा हूँ? एक्सप्लेन कर दें। क्योंकि फ्रॉम दिस इक्वेशन ए वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो वेरिएशन अलोंग दी नॉर्मल टू द स्ट्रीम लाइन। कोई भी कंपोनेंट इस इक्वेशन के अंदर ऐसा नहीं है जो ये बता रहा हो कि चीजें नॉर्मल टू द स्ट्रीम लाइन भी वेरी कर रही है, तो तब एक्सेलरेशन अलोंग दी स्ट्रीम लाइन हमें मिल रही है। जो सारी की सारी वेरिएशन दैट इज अलोंग द स्ट्रीम लाइन। तो इसलिए मुझे ये पता है कि मेरी जो डिपेंडेंसी है किसी और वेरिएबल पे नहीं है, एन वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करती। तो इसलिए मैं अपने तमाम पार्शियल सिंबल्स को डेफिनेट सिंबल से रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहले पार्शियल कर रहे थे। इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले, डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हमें क्या पता है कि प्रेशर वो डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स, two variables s and n. Pressure would be a function of s as well as n, right? We also knew that weight would be function of s and n, right? And velocity would be a function of s and n, right?
ये तो हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव कर दी थी, वेलोसिटी जो है अलोंग द स्ट्रीमलाइन दैट इज ओनली अलोंग द स्ट्रीमलाइन n पे डिपेंड नहीं करती. सो वेलोसिटी इज ओनली फंक्शन ऑफ s, राइट? इज इट क्लियर? यस सर. वेट का जो कंपोनेंट हम ले रहे हैं दैट इज ओनली अलोंग द स्ट्रीमलाइन, इसलिए वेट की जो n डिपेंडेंसी है वो हमने खत्म कर दी. वेट ओनली बिकेम फंक्शन ऑफ s. क्लियर? जी सर. और p के हवाले से हम देख रहे हैं कि p की जितनी भी टर्म्स यहाँ पे p की एक ही टर्म आ रही है दैट इज ओनली इंटीग्रेटिंग इटसेल्फ विद टू रिस्पेक्ट टू s. अगर p फंक्शन होता n का भी तो वी शुड हैव रिटन पार्शियल p बाय पार्शियल s प्लस पार्शियल p बाय पार्शियल n. सही है, लेकिन ऐसी तो कोई डिपेंडेंसी हमारे पास आ ही नहीं रही इक्वेशन के अंदर. तो इसका मतलब p भी इज ओनली फंक्शन ऑफ s अलोंग द स्ट्रीमलाइन. तो अलोंग द स्ट्रीमलाइन प्रेशर वेरिएशन सिर्फ जो प्रेशर अलोंग द स्ट्रीमलाइन उसी पे डिपेंड कर रही है. ठीक है, इसलिए हमने अब जितने भी पार्शियल सिंबल्स हैं इक्वेशन के अंदर सबको हम डेफिनेट डेरिवेटिव से रिप्लेस कर सकते हैं. मैथमेटिकली आपको ये अंडरस्टैंडिंग तो है ना कि पार्शियल डेरिवेटिव कब लेते हैं और डेफिनेट डेरिवेटिव कब लेते हैं. सर बाकी चीज़ों को कांस्टेंट बस कर देना. पार्शियल डेरिवेटिव तब होते हैं जब आपका जो फंक्शन है, जो वेरिएबल है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन मोर देन टू वेरिएबल्स, मोर देन वन वेरिएबल. सॉरी, फॉर एग्जांपल अगर कोई फंक्शन, इसको मैं आपको समझाना चाहूँ, इट्स थोड़ा सा मैथमेटिकल हो जाएगा लेकिन चल इट इज इंसेशनल क्योंकि हमें कोई कोर्स के अंदर ये चीजें करते रहना है, आपको कोई चीज समझ आनी चाहिए. नॉर्मली आपके पास क्या होता है, y इक्वल्स टू x स्क्वायर, राइट? जी. मैं आपसे कौन सा डेरिवेटिव लें y का रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखेंगे आप? d जी. y बाय dx इक्वल टू 2x, राइट? जी. अब मैं लिखता हूँ y इक्वल्स टू x स्क्वायर d प्लस 2d, राइट? जी. अब मैं आपसे कहता हूँ d का y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करेंगे? Now your y is function of, y is basically function of x and d. Now you can not simply write g dy by dx. जी. What you will do, will write partial y by partial x equals to partial by partial x of this function. ठीक है? जी. इसका टोटल डेरिवेटिव नहीं है. With respect to x is only its partial derivative. Total derivative क्या होता? Derivative with respect to x as well as with respect to t. ठीक है, तो वो टोटल डेरिवेटिव होता है इसका. और इसी तरह अगर आपसे कहता है with respect to t लें तो आप partial y by partial t लिखते, not dy by dt. Because your y is dependent upon x as well. तो जब भी डिपेंडेंसी एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे होगी तो आप पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे. ठीक है? जी. इज इट क्लियर? जी सर क्लियर. ओके, तो अब हमने इस इक्वेशन के अंदर प्रूव कर लिया कि स्टार्टिंग से पहले तो हमारी सोच यही थी कि जो प्रेशर, वेट या वेलोसिटी है ये सारे के सारे डिपेंडेंट हैं s और n के ऊपर. और जब हमने लॉन्ग द स्ट्रीमलाइन इक्वेशन लिखना शुरू किया और हमारे पास जो एंड रिजल्ट आया इक्वेशन a की फॉर्म में, तो वी आर एबल टू प्रूव दैट डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ जो है अभी अलोंग द स्ट्रीमलाइन s कोऑर्डिनेट के ऊपर है, s वेरिएबल के ऊपर है, n के ऊपर नहीं है. तो इसलिए हम तमाम वेरिएबल्स को रिप्लेस कर सकते हैं विद डेफिनेट डेरिवेटिव्स. ठीक है, तमाम पार्शियल डेरिवेटिव्स को रिप्लेस कर सकते हैं विद डेफिनेट डेरिवेटिव्स. क्लियर? जी. सो sin थीटा कैलकुलेट हो गया, एक टर्म हमने सिंपलीफाई कर ली, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है sin थीटा की कैलकुलेशन में? नो सर. ओके, नेक्स्ट इज माइनस पार्शियल p बाय पार्शियल s. माइनस साइन को छोड़ देते हैं, फिर पार्शियल p बाय पार्शियल s को डिस्कस करते हैं. पार्शियल p बाय पार्शियल s मैं कहता हूं कि मैं लिख सकता हूं dp बाय ds. ठीक है, इसी से एग्री करते हैं, इसमें कोई इख्तिलाफ तो नहीं है मेरा और आपका? सही है सर. ये समझ आ गई है? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट. अगर अभी भी समझ नहीं आ रही तो इसको थोड़ा सा मैं एक टर्म एक्सपेंड करके बता देता हूँ. मेरे पास प्रेशर P है एंड इट्स वेरिएबल ऑफ टू, इट इज डिपेंडेंट अपॉन, इसके दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं S एंड N. ऐसे ही है? जी. आई वांट यू टू राइट द डिफरेंशियल ऑफ दिस प्रेशर, इसका dP लिखें. तो आप क्या करेंगे? यू विल डेरिवेट इट विद रिस्पेक्ट टू S, ऐसा ही करेंगे, पार्शियल P बाय पार्शियल S एंड यू विल राइट ds
with it, which is because it is differential ले रहे हैं, इसलिए the variable का derivative और फिर उसके respect से उसका अपना differential है, सही है? जी Plus you will write change in pressure with respect to the other coordinate, which is n coordinate, into its differential dn. नीचे partial symbol है और ऊपर की तरफ जो लिखा हूँ वो direct derivative है d, ठीक है? जी अब हमने ये प्रूफ कर लिया कि dn के ऊपर कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं, ठीक है? There is no change of pressure with respect to dn, तो dn is basically zero या constant, ऐसे ही है? n जी constant और dn जो है वो zero हो जाएगा, क्योंकि n change नहीं हो रहा हमारा, along the streamline n change होता है नहीं, it जरूर remains constant. तो n अगर constant तो उसका differential क्या होगा? Zero. तो अगर differential zero हो गया तो ये पूरी टर्म zero हो जाएगी, ऐसा ही है? जी तो अगर ये पूरी टर्म zero होगी तो ये प्रूफ के dp equals to partial p by partial s ds, और इन अदर वर्ड्स इसको मैं रीअरेंज करके मैंने ये फॉर्म लिख दी है, ठीक है? कि partial p by partial s equals to dp by ds. क्लियर? यस सर तो ये टर्म भी हमने सिंप्लीफाई कर ली. नाउ द लास्ट टर्म v partial v by partial s, इसको थोड़ा सा समझना है आपने. हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, पूरी इक्वेशन को ds से डिवाइड करना चाह रहे हैं, ऐसे ही करना चाह रहे हैं ना? यहाँ पे हम ds ले आए, dp by ds कर लिया हमने, sin थीटा में भी हमने dz by ds कर लिया. अब यहाँ पे हम ds कैसे लेके आए, ठीक है? तो हम ये पता है वेलोसिटी इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन द s कोऑर्डिनेट, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा समझना है आपने. एक्चुअली वी हैव रिटन v dv by ds इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं एज हाफ d by ds ऑफ v स्क्वायर. समझ आ रही है ये चीज क्या किया मैंने? जी सर आपने उसका एक्सेलरेशन फंक्शन लिख दिया है जिसको मैंने एक्चुअली इसके ऊपर मैंने डेरिवेटिव अप्लाई किया है, ऐसे ही है ना? जी अगर मैं राइट साइड को एक्सपेंड करूं तो व्हाट आई विल सी दी लेफ्ट साइड जो मेरी एक्चुअल फॉर्म है मेरे पास, ठीक है? जी सर थर्ड पार्ट को भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया? ये सारी सिंप्लीफिकेशंस अब मैं जो इक्वेशन ए के अंदर रिप्लेस कर रहा हूँ. सो माइनस डी पी बाई डी एस माइनस gamma sin theta is dz by ds minus rho half d by ds of velocity scale. This should be equal to 0. Now if I take differential of the whole equation with respect to ds तो क्या होगा? ds राइट साइड पे जाके 0 हो जाएगा, ऐसा ही है? और माइनस भी तो जाके 0 हो जाएगा. So I can write my equation as dp plus gamma dz plus half rho differential of v square equal to 0. Clear? Yes. ठीक है, ये फॉर्म क्लियर होगी. Now some further simplification on this equation. I can write gamma as rho g, ऐसे ही है? ठीक है, gamma को rho g लिख सकते हैं. तो rho भी कॉमन ले लूं अगर थ्रूआउट इक्वेशन में, तो मेरे पास क्या बच जाएगा? dp by rho plus g dz plus half differential of v square.
क्लियर? ठीक है यहाँ तक? जी सर। Now I'm integrating on both sides. ठीक है? I'm integrating this equation. What I'm doing is applying integral on both sides. So what we'll have is integral dv by rho plus g is a constant, so we'll write it as it is, g integral dz plus सर रो भी कांस्टेंट होगा? कहाँ पे? नहीं होता फर्स्ट डेंसिटी? टर्म में अभी हम बात करते हैं उसके ऊपर, बात करते हैं। इसको हम कांस्टेंट नहीं अज्यूम करें। हाफ जब डिफरेंशियल के ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करते हैं तो दे कैंसिल आउट, ऐसा ही है। इंटीग्रल ऑफ dv स्क्वायर वुड बी इक्वल टू v स्क्वायर, राइट? सो हाफ v स्क्वायर और राइट साइड पे क्या आ जाएगा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसा ही है। Now we can see first integral को भी हम इस तरह लिख देते हैं dp by d rho, dp by rho प्लस 1 dz का इंटीग्रल क्या होगा? gz, ऐसा ही है, प्लस v स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू कांस्टेंट, राइट? ये जो इक्वेशन अभी आपके सामने लिखी हुई है, इसकी डेरिवेशन में assumptions क्या हैं? डेरिवेशन करने से पहले हमने एक तो कहा था कि जो हमारी विस्कोसिटी फोर्सेस हैं वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसका मतलब इट इज ओनली वैलिड फॉर इनविसिड फ्लोज, ऐसा ही है। यस सर। सेकेंडली हमने क्योंकि ये अप्लाई ही अलोंग द स्ट्रीमलाइन की है, तो इट इज वैलिड फॉर ऑल द फ्लोज दैट आर अलोंग द स्ट्रीमलाइन। अब अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें जिसको मैंने इंटीग्रेट नहीं किया, तो अगर मेरा फ्लो इनकम्प्रेसिबल है तो फिर तो मैं डेंसिटी को कांस्टेंट ट्रीट कर सकता हूं, ऐसा ही है। Yes, sir. अगर फ्लो इनकम्प्रेसिबल नहीं है तो देन आई नीड टू हैव अ फंक्शन ऑफ डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। जैसा कि हमने Yes, sir. आइडियल गैस के केस में क्या कहा था, डेंसिटी इज डिपेंडेंट अपॉन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू आइडियल गैस लॉ, ठीक है? तो वी विल नीड टू हैव अ रिलेशनशिप ऑफ दैट सॉर्ट टू इंटीग्रेट दिस फर्स्ट टर्म। तो अगर मेरा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है फिर तो मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं कीपिंग डेंसिटी कांस्टेंट। लेकिन अगर फ्लो जो है या फ्लूइड जो है वो कंप्रेसिबल है तो देन आई नीड टू हैव अ रिलेशनशिप। तो फिर मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा तब जब मेरे पास ये दो assumptions तो वैलिड हैं, तीसरी assumption वैलिड नहीं है। इफ आई अप्लाई इनकम्प्रेसिबिलिटी assumption, द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल means density is constant। तो मेरी फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी? P by rho वी बाय plus gz plus v square by 2 equal to constant। This is your famous Bernoulli equation which is valid under these assumptions। So Bernoulli equation is along the streamline, valid along the streamline. This is the is it? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है सर। तो अब हमारा जो बाकी पूरा चैप्टर है वो इसी इक्वेशन की डिस्कशन पे गुजरेगा। इसके अंदर ये जो टर्म्स p by rho है प्लस gz है प्लस v square by 2 है, इसका क्या मतलब है, ये जो कांस्टेंट है इसका क्या मतलब है, तो विल बी डिस्कसिंग दोस इन द रिमेनिंग ऑफ द चैप्टर। इन सारी टर्म्स की हम
बात करेंगे, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट होता है इसको कहते हैं कांस्टेंट अलोंग द स्ट्रीम लाइन, ठीक है, क्योंकि हमने ये अप्लाई ही अलोंग द स्ट्रीम लाइन की है। अब डेरिवेशन के स्टार्ट में हमने कहा था कि हमने दो तरह से लॉ अप्लाई करना है, अलोंग द स्ट्रीम लाइन एंड नॉर्मल टू द स्ट्रीम लाइन। तो पहले हम नॉर्मल टू द स्ट्रीम लाइन को डिस्कस करके अपना काम खत्म कर लेते हैं, फिर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे कि हमारा अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन क्या है या नॉर्मल टू द स्ट्रीम लाइन क्या है, ठीक है। अक्रॉस या नॉर्मल जब एक ही टर्म के लिए हम यूज करते हैं। दोबारा से फिगर नजर आ रही है जी? जी सर। नॉर्मल टू द स्ट्रीम लाइन क्या होगा हमारे पास, देयर विल बी सिमिलर प्रेशर फोर्स, राइट, इस तरह से, जी that would be P minus del P n into the area, right? एरिया क्या होगा यहाँ पे, del S into धन्यवाद। del y, right? टॉप पे क्या प्रेशर फोर्स होगी, P प्लस वही plus del P n into del S del y, and finally the component we weight along the streamline, ये वाला, ये क्या होगा, कॉस थीटा। ये जो कंपोनेंट में वेट का ड्रॉ करना है इसे करते हैं, this would be W and delta WN, ठीक है। So again across the streamline we'll have so F equals to MA across the streamline. Normal to the streamline या cross to the streamline का मतलब एक ही है, ठीक है। So that would be again summation of the forces along the normal direction, that is delta Fn should be equal to mass of the particle into acceleration normal to the streamline An, and we know that Fn would be equal to L Fpn plus del Wn, and mass would be equal to density into volume into acceleration क्या होती है जी, normal along the normal to the streamline, फिर v स्क्वायर होगा। v square over r, yes, where v is the velocity and r is the radius of curvature of the streamline, ठीक है। तो अब हमें पता है कि Fpn किसके इक्वल होगा जी, this upward force which is P minus del Pn minus this downward pressure force P plus delta Pn, ठीक है। So we'll just write P minus del Pn minus P plus del Pn into the area which is del S into del Y. Del Y. Weight would be acting downwards and that would be equal to minus del W cos theta, right? जी सर। जी सर। And that should be equal to rho del volume into V square by R. ठीक है, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ ना आई? अगेन जब ब्रैकेट्स ओपन होंगी तो this P will cancel with this P and we will have minus 2 delta Pn del S del Y. W would be equal to gamma into
वॉल्यूम del b cos theta minus rho del b volume into v square by r equal to 0. Clear? Yes, sir. Again, we can prove that from Taylor series del Bn would be equal to किसके इक्वल होगा जी? Partial p by partial n जी. Over partial n over 2 into partial n over 2. del Bn by del n by 2, sorry, not del Bn, del n by, right? जी sir. ये substitution हम अपनी equation में करते हैं. So we'll write minus 2 partial p by partial n into del n by 2 into del s del y minus gamma del v cos theta minus rho del volume into v square by r equals to 0. Again, we can see the volume terms में cancel out हो जाएंगी. ठीक है. So we can cancel this term del n del s del y, this volume term with this volume term and this volume common आके सारे उस तरफ जाके 0 हो जाएंगे. So we'll have, and this 2 will cancel with this 2. So again we'll have that form of the equation which is required, which is minus partial p by partial n minus g cos theta minus rho v square by r equal to 0. Clear? Yes, sir. Is it clear? Clear, sir. Again, we can see that partial p by partial n would be equal to किससे इक्वल होगा जी partial p by partial n? dp by dn, right? Dp by n, yes. And cos theta would be equal to dn by dz. Yeah, dz by dn. dz by dn. ठीक है? तो ये तो रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं अपनी इक्वेशन में. Yes, sir. तो जब ये तो हम कर लेंगे रिप्लेसमेंट्स, तो फिर हमारी इक्वेशन उसी तरह की इक्वेशन आ जाएगी जिस तरह हमारे पास पहले से मौजूद थी इक्वेशन. ऐसे ही है. ठीक है. तो लेट्स हैव 10 मिनट्स ब्रेक हियर. ठीक है?